अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फेडरल बोर्ड की ग्रेड 9 की कंप्यूटर का यूनिट 6, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इलस्ट्रेट द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर बाय इंडिविजुअल। कि अकेले की जब आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो तब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो फर्स्ट है हमारे पास, डोंट ड्रॉप और शेक योर कंप्यूटर, मूव इट जेंटली, wipe the screen, keyboard and mouse regularly with a soft dry cloth, place your computer on a flat dry surface, keep it away from water and heat, avoid running too many programs at once, let your computer reset if it's getting too hard, adjust your chair and desk so you sit comfortably. Make sure your screen is at eye level. Save important file to an external drive or cloud storage or prevent data loss. Set strong unique password and use antivirus software to keep your computer safe from threats. Keep your software and operating system up to date to fix bugs and security issues. ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसमें से आप लोग अपनी मर्जी के कोई से भी 5 पॉइंट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, चलिए पहले ना हम लोग इसके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये है हमारे पास, आप इतना ज़्यादा देख के परेशान नहीं होना, ये वही वाला टेक्स्ट है, जैसे हमने इसका साइज बड़ा किया, बाकी सारा कुछ वही है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज इनटेल। तो इसमें से भी आपके पास आप ऑप्शन गिवन है, आप कोई से भी 5 कर सकते हो। ओनली गेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम legitimate source and make sure it properly licensed. Follow the rules and terms given with the software. Regularly update your software to fix problem and stay secure. Install software as instructed to avoid issues. Don't share or disrupt software unless you have permission. Turn on and use any built-in security features like firewall and antivirus. Uninstall software you don't use to keep your system clean. Keep up with the best patient and new information about the software you use. Be careful about the what permission you give and check privacy setting. Regularly check up important file to prevent data loss. इनमें से आपको ऐसे भी 5 पॉइंट जो आपको इजी लगे आप लोग कर सकते हो। ओके, तो थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, how to you sorry how do you stay safe while conducting data searches online। तो इसके भी आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स गिवन हैं, जिनमें से आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कोई भी 5 कर सकते हो। जैसे चूज वेल नोन सर्च इंजन लाइक गूगल और बिंग, डोंट क्लिक ऑन लिंक फ्रॉम अननोन और स्ट्रेंज सोर्सेज, look for HTTP in the website address to make sure the site is secure, create unique strong password for your account, add access security with two-factor authentication when available, recognition common online scam to avoid falling for them, avoid deal that seem too good to be true, keep your browser and security software updated against it, install privacy extension, use setting to block ad and trackers, keep और पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट ऑन अनफेमिलियर वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट एंड इनलेस सम की एक्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग। इसमें भी आपके पास पॉइंट्स है, आप अपनी मर्जी के कोई से 5 पॉइंट कर सकते हो। फर्स्ट है हमारे पास, कंट्रोल हु कैन सी योर पोस्ट एंड पर्सनल इन्फो, डोंट शेयर सेंसिटिव डिटेल लाइक योर एड्रेस और फोन नंबर, थ्रेट्स अदर विद काइंडनेस एंड अवॉइड बीइंग रूड, avoid bullying or spread rumors about others, make sure information is correct for sharing it to avoid separate false news, choose passwords that are hard to guess. Remember that when something is online, it's hard to remove. If you use something else content like photo or article, give them credit. Share only what necessary and avoid posting too much personal detail. Don't spend too much time on social media. Be aware of its impact on you. Use the platform tool to report harmful or inappropriate content. The next question हमारे पास, sketch the positive impact of social networking in today's society। इनमें से भी आप कोई से भी 5 पॉइंट कर सकते हो। जैसे है हमारे पास, help friends and family stay connected even if they are far apart, lets people from different countries talk and share easily, provide fast news about they're happening around the world, create groups for people with similar interests or challenges, allow business
to reach more people and advertise their product, raise awareness for important causes like the environment or a social issue, give people platform to share their talent and ideas, help coordinate and share information during emergencies and natural disaster, provide a space for sharing and discovering art, music, other activities, work, offering a variety of entertainment options and interaction experience. ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रिलेट फेक न्यूज़ अफेक्टिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स। चलिए इसके पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास फेक। अब यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन नहीं कि मतलब दैट्स मीन कि आप लोगों ने ये सारे करने हैं। फेक न्यूज़ कैन ब्लर द लाइंस बिटवीन वर्ड्स रियल एंड वर्ड्स नॉट। पीपल माइट फ्रॉम रॉन्ग ओपिनियन बेस्ड ऑन फॉल्स स्टोरीज। Decision based on the fake news can be harmful or incorrect. Fake news can distract or delay important discussion. It can deepen divided between people or groups. Question number 7 है हमारे पास, summarize some of the adverse effect of social networking। यहाँ पे भी आपने ये सारे पॉइंट करने हैं। Your personal detail might get exposed or stolen. People can be harassed or bullied over the internet. Incorrect or misleading information can spread quickly. Spending too much time online can be addictive and reduce productivity. Can lead to feeling stress, anxiety, or depressed. Might depressed face-to-face interaction with people. Risk of falling for online scam or having your identity stolen। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, interrupt the danger associated with the spread of fake news online। People may believe, इसका आंसर है हमारे पास, people may believe incorrect or misleading information which can shape their opinion and decision। It becomes hard for people to tell what's true and what's not, leading to confusion about important issues। Frequent fake news can make people distrust on news sources, including reliable ones। Fake news can deepen division between groups by spreading based or in inflammatory content। Fake news can mislead people, create confusion, or draw trust, lead to harmful decisions, increase social divide, and disrupt public discussions। Okay, the next question है हमारे पास, examine the computing influence on a personal privacy। ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। Computing has a significant influence on a personal privacy in various ways। Online activities such as browsing history and social media interaction are often tracked and recorded. Personal information is collected by the website and apps, sometimes without clear consent. Both government and a corporation may monitor online activities and communication। Many services have default settings that may not prioritize user privacy। Personal information shared on a social media can be accessible to be a wide audience and may remain online indefinitely। Last question हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, criticize about the role computing play in the shopping educational practice। Here are some criticism of how computing affects education। Not all students have the same access to technology, creating gap in learning opportunities। Relying too much on computers can sometimes reduce students' ability to think deeply and solve problems on their own। Next time हमारे पास, technology collect a lot of personal information which can lead to privacy issue। Next time हमारे पास, computer can be distracted with game and social media, taking attention away from the learning। Many teachers might not be fully trained to use new technology effectively। Next last point है हमारे पास, educational technology can be expensive and some products might be more about making money than improving education। ये थे हमारे पास यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस।